Good afternoon, everyone. Today is our third class on departmental accounting for CMA, right? And this one will be the last class for this chapter. Now, what you all have to do after completing this chapter, go for MTP RTP for June 2025 and solve at least 6 to 7 terms paper, past paper. Okay, 6 to 7 terms past paper, whatever has been came in the previous years. That means June, December of 2023, 24, and so on. At least 7 past paper you have to practice. You know? Now, what is the reason? The same questions with different figures now will be coming in repetitive manner. Understood? There is no guarantee for that, but trend follows this. Okay. So, coming to question number 19. 19 and 20, these two questions were left. Okay. According to the analysis, I can say that your question number 19 and 20 is more important than any other topic. Okay. After completing this class, and I'll say which one to do and which one not to do before your exam. All the questions you have to, but before exam you need to do what? Selective. Then I'll say. Okay. See, the full data is not given away. What I said, the full data is not given away. So how to do this? The following details are available for a business of a year. There are 3 departments. Department X, Y and Z. Okay. Opening stock is given in units, not in rupees. What I said, opening stock is given in units, not in rupees. Purchase also the same thing, it is given in units, right? And sale, there is units also, it is given in your rupee terms. Both is given. Now how to do this? Take total purchase value is given of 1 lakh rupee. It is observed that the rate of gross profit is the same in each department. What I said? The gross profit rate is what? Same in each department. That means what? Whatever GP will come, GP means your gross profit. You have to find out the rate also. How you will do that? That is uniform for all the departments. That means department X, department Y, and department Z. Right? I don't know how much you know, but still, once more I am saying. Opening stock in units is given. Purchase is given in units, and sale also is given in units as well as per unit in terms of rupee also. But the thing is that to make trading account, we need to have closing stock also, assuming that all the stocks are not being sold. Okay. Now, how to calculate this one? Normally, whatever you have learned, according to that I am saying, opening stock, let's say, for example, this data is not given in your question, right? The data I am giving you to make you understand, then I will go for this question. Think that you have opening stock of 100 rupees. So what's the meaning of this opening stock? The stock which was there in the previous year, the closing stock which was there in the previous year is the opening stock of this present year, isn't it? Yes or no? Bolo. The closing stock of the previous year is the opening stock of this year. That means what? This opening stock of 100 units was the closing stock of the previous year. Okay. This year we have purchased some of the units. Let's say purchase 20 units. All these things are coming in units, not in rupee. 20 units. That means what? How much you have in your hand? 100 units
of the previous year, that is the opening stock of this year, that is 100. 20 units you have purchased this year, that means what? How much you have in your hand? 100 plus 20 is 120. Okay. Now what you will do? Think sale units is also given. Think sale units also given. 70 units you have sold. What I said, 70 units you have sold. That means what? How much unit is left in your hand at the end of the year, or whenever you are calculating. Normally we find out at the end of the year. Opening stock, once again, opening stock is what? 100 units. I'm writing short. Purchase is 20 units. How much you have sold? 70 units you have sold. That means how much is left in your hand. Now how to calculate it? 100 units in the beginning of the year, 20 units you have purchased. That means what? Plus 20. That comes to 120. How much you have sold? 70. That means minus. How much is left now? 120 minus what? 70 comes to how much? Comes to say 50 units. That is your closing stock, which is left in your hand. Got it? 50 units you have in your hand. That is your closing stock. The same thing you have to do in this sum also, right? Students who face problem in English, उनके लिए हम बोल रहे हैं हिंदी में भी 100 units is there in your hand. I mean 100 units हमारे हाथ में है. सर कहाँ से हाथ में? जो पिछले साल रह गया था वो इस साल क्या रिपोर्ट हुआ? तो इस साल कितना है आपके पास? 100 यूनिट्स. 20 यूनिट आपने खरीदा तो अभी हाथ में कितना है? 120 है. अच्छा, आपने इस साल सेलिंग कितना किया? 70 यूनिट्स आपने बेच डाला तो वो गया माइनस. तो रहा कितना? 50 यूनिट्स इज लेफ्ट. 50 यूनिट आपके हाथ में रहा. दैट इज योर क्लोजिंग स्टॉक. क्लियर? Come to the main question. Right? I'm rubbing it. You don't have to write this one, but it को लिखना नहीं है. I was just explaining how to do this. Okay. How much opening stock is given? 120 opening stock is given. What I said, opening stock plus purchase minus closing stock equals to closing. Opening stock plus purchase minus sale equals to what? Closing stock. Same thing they have done. First understand and then you will do. Okay, I'll give you the time. Opening stock according to what? X, Y and Z. Do it together. एक साथ ही कर लेना. अलग से X, Y and Z करने तो टाइम लग जाए. Don't waste your time. Okay. So do at the same time. The same way it is given. What? X, Y and Z. Opening stock plus purchase means add, minus what? Sales, sold unit sold. What you will get? Closing stock you will get. So from where you have got this thing? From the question. Question itself states for X it is 100, for Y it is 80, for Z it is 152. So put it 120, 80 and 152. Right? Purchase, how much units? Purchase. For purchase, how much units is given? How many units is given? 1000 units is given over here. 2000 and 2400 means 2400 is given. Now what we have to do? So we have to put this thing according to the question is given. That means what? Add purchase 1000, 2000 and 2400. Got it? I've put over here. Now sale units is also given. 1020, 1920, 2496. तो put in the same way. सेल का मतलब क्या? माइनस हो जाएगा ना, तो हाथ चला गया वो. तो 1020, 1920 and 2496 according to your question. ठीक है. You will do minus. What you will get? The closing stock is 100. 120 plus 1000 is how much? 1120. Now 1120 minus 1020 is how much? 100. So in the same way you are getting this 100, 160 and 56. ठीक है. Is it clear till here? So what is this in units or in rupees? This is units, not in rupees. ये units में निकला हो. You have to convert it in rupees. वो कैसे convert होएगा मैं बोलूँगा. First find out the units. Got it? After
But sir, if this sum, the same sum, I'm saying the same sum is been repeated in many of the terms. Check करो वो अपना past papers को. You will get this sum in repetitive manner. यही आता है, ऐसा नहीं है. तो कुछ भी आ सकता है, but still ये हमने ट्रेंड फॉलो किया हुआ है कि this type of sum is given in एग्जाम को रिपीटेड नहीं देता है. एक टर्म में नहीं देता, दूसरा में देते हैं इस तरह. ठीक है. I hope this is clear how to find out closing stock units in units. Now come to what in terms of rupee, how we will convert. If this sum comes in your exam, what you will do? Make half page trading account first. क्या हम बोले? Half page trading account first. या फिर 75% of the paper में आप trading account पे पहले बना. ठीक है ना. Put all the data over here. Sir, how to put the data? Opening stock, closing stock, purchase, sale, and your gross profit. ठीक है. Put करके रख देना. अभी उसमें कुछ ढाल तो नहीं पाओगे भाई. You have to find out in terms of rupee. समझा? तो only make the format and keep a blank space over there. मैंने x y z इस तरीके से उसको blank रखने का. Then come to working note number 1. अब जो सिखा रहा हूँ working note या follow the question. Which one was given as in terms of rupee? Only your sale per unit in terms of rupee दिया हुआ है. What is it? Sale in terms of rupee दिया हुआ है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का. And the total purchase of all the departments. What is it? The total purchase of summarizing all the departments X, Y, and Z तीनों वो summarize करके how much is the total purchase value? The purchase value is rupees 1 lakh. It's not in units, it is in rupees. Rupees 1 lakh is given. So इस सब में क्या निकाले कैसे देख लो. Department X, Y, and Z. Department X, Y, and Z. How much was the sale? So 1000 units, 2000 units, and 2400. 2400 units was given in your question. Sale में आकर देखो sale. ठीक है ना. In terms of rupee, it was given per unit. ये totality नहीं है, per unit. ठीक है. 20 rupees, 22.5, 25 rupees. How you got this one? From your question. Question में दिया होगा. Now multiply it and find this one. Multiply it and find this one. Multiply it and find this one. समझा? Total आ गया ना? It should be done over here. तुम लोग का framing ही गलत है. This portion should be done over here. समझा? After doing this, if you plus it out, how much you will get? 1,25,000. 125,000 you will get. Now what to do from this sale? This is what total sale का price आ गया अपने पास. Total sale. Now sale minus purchase is your profit, isn't it? आया ना? Sale minus purchase is a profit, yes or no? Total sale value you have got 125,000. अब क्या करने का? Less what? Purchase. Which one? The total one. वैसे भी totally दिया हुआ है. That is rupees 1 lakh. Sale minus purchase is what your gross profit. How much you will get? 25,000. ये यहाँ पे करना था. The framing of your answer in your institute mat is wrong. आपको वहाँ नहीं लिखना चाहिए. ठीक है? Now the way I have done, you will also do in the same way. ठीक है? Now 25,000 is your what? Your gross profit. Now sir, how to find out this one? How to find out the percentage? कैसे निकालें? 25,000 is your gross profit. हाँ. Total sale value कितना था आपका? 125,000. Okay. How you will find it out? GP is 25,000 in totality. बार बोल रहे हैं in totality. 25,000 divided by how much? Sale. Sale is how much? In totality. 125,000 into 100 करेंगे तो रेट आ जाएगा. तो how much is the rate? फटाफट बोलो. कैलकुलेटर क्या है? यहाँ पे 3 0 यहाँ पे दिख ही रहा है. 3 0 यहाँ पे 3 0 यहाँ पे टक 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 20%. हाँ टक टक. 25 से एक जाएगा तो यहाँ पे वो कितना हो जाएगा? 5. 25 1 is 25. 5 are 125. यहाँ पे 5 और यहाँ पे 100. इसको भी काटो, इसको भी काटो. How much you will get?
20, that is what 20%, and GP is what 20% of your selling price. इतना कुछ नहीं करने का, सीधा कैलकुलेटर करना. What it, so what we have find it out, the GP rate. समझ में आया? What is it? GP rate. Now what we have to find out the cost price. Sale price is given in the question 20, 22.5 and 25. तो 3 selling price is given. ठीक है, वहां से क्या माइनस करना है? 20% माइनस करना है. What is that 20%? 20% is your GP rate. ठीक है, अच्छा 20 minus what 25%, how much it comes? Of sale है ना, of sale. Okay, no problem. So cost में बदल सकते थे, बट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. डायरेक्ट माइनस करोगे आंसर गलत हो जाएगा. I mean टफ हो जाएगा, गलत कैसे टफ हो जाएगा. ठीक है, नाउ हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट. हाउ टू फाइंड द प्रॉफिट सर, 20 रुपए का 20 रुपीज इंटू वो 20% कम्स टू हाउ मच? से 20 रुपीज का 20% कितना आएगा? 20, हाँ 20%. 20 रुपीज का 20% कितना आता है? अरे जल्दी करो यार, 4 रुपए 4. ना सेल प्राइस इज 20, profit is your 4, so how much is your cost? 20 minus 4 is what? 60, that is your cost. बात को आ रहा है क्या बोल? मैं करके दिखाऊं तो आप बोलो, यहाँ कर दूं क्या? ये भी हम रफली दिखा रहा, आप लोग खुद से करना है. वेट, खुद से करना. सेल प्राइस इज गिवन ऑफ x, y and z. सेल प्राइस कितना? 20 रुपीज. ₹20, 22.5 है ना, 22.50, and the last one is how much? 25 रुपए. हाँ ये रुपीज में, ठीक ना. So how much is the profit? How much is the profit? What we have find out, 20% GP rate, 25%, 20% on what? 20% on this 20 रुपए. This is in रुपया, ठीक ना, rupees. So 20 rupees into 20% comes to how much? जल्दी बोलो. 4%. But 4 rupee. हाँ 4 rupees. 4 rupee. 22.50 रुपया into 20% comes to how much? Calculator. फटाफट. 4.5. 22.5 into 20% is what? 4.5. ठीक है, 4.5. The next 25 rupees into 20% comes to how much? 5 रुपए. 5 rupees. Sale price is there, profit भी मिल गया. Now what to find it out? The cost. आपको cost निकालना है. X, Y, Z तीनों. For X कितना होगा? For profit. हाँ. तो 20 rupees minus 4 comes to 16. 22.5 माइनस कितना है अपने? 4.5 ना. 4.5 comes to how much? कितना? बराबर 18 rupees, I guess. 18 rupees होगा. And for Z 25 rupees minus कितना? 5 रुपए. 20. It's 20. It's 20. Now what we got the cost price, right? What we got the cost price. ठीक. Now put this one और इसी से ही आपका पूरा सम बनेगा. With the help of this data you will be able to do all the sums. समझा?
₹16, ₹18, 16, 18 and 20. It is in terms of, come on, make it fast. एकदम हाई स्पीड में. पहला क्या करना है, व्हाट टू डू, हाउ टू स्टार्ट दिस सम. हाफ पेज ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना लो, है ना, वही हम समझाए. हाफ पेज इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सम व्हाट यू हैव टू डू, हाफ पेज या फिर 75% ऑफ योर पेपर पेज का एक रफ ड्राफ्ट बना लो of trading account. ठीक है. In the debit side also 3 columns should be there. In the credit side also 3 columns should be there. XYZ XYZ. Yeah. Particulars XYZ particulars XYZ again particulars XYZ. ठीक है ना. Debit credit there. What you have to write in the heading? Departmental trading account. Then what we have to do? The first thing what we have to find it out. Closing stock. तो working note number 1 में closing stock करके दिया. ठीक है. अपने जैसे हमने किए हुए फाइंड आउट द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ये वो सब. स्टार्ट स्टार्ट डूइंग सम फटाफट. एनी डाउट इज देयर फॉर दिस वन? कुछ है नहीं ये सब. ओके स्टार्ट स्टार्ट. आई विल गिव यू ओनली 10 minutes टू मेक इट फास्ट. क्वेश्चन नंबर 19 ना. Don't go with me. I'm just making the format. Go up your own. Split बना के करो.
purchase. Same thing, whatever you have done from your class 11, 12. This should be the approach of this question, Sita. This should be the approach of this question. Whenever somebody come, पहले ये काम करें सर, डेटा तो फाइंड आउट ये नहीं है, ये don't have any data. तो जितना बोला गया तो उतना ही करो. डेटा तो फाइंड करना पड़ेगा पहले बोलो. तो ग्रॉस कोई बोलता है डिपार्टमेंटल ग्रॉस प्रॉफिट. Done. हाँ अरे जी তো লাস্টের দিকে করছি। completing the sum is informed. Alright. Stock of X, Y and Z. बराबर बोलो. How much is the question? It's 120. 120. Hmm. 120 for Y it is how much? 80. 80. For Z 152. 1
152. Come to purchase. Purchase 1000 Excel. Purchase how much? 1000. For Y it is how much? 2000 2000. or 2400. 2004. सही बोला ना? मत कर दे. 120, 80 and this one. 1000 and 4 double check. Now come to sales. How much is the sales in units? बता. 1020. 1000. 1020 ऐसा बोलना है. 1020 ना. তারপরে y হচ্ছে 1920 1920. আর z হচ্ছে 2496. 496. How much will be your closing stock? Say 120 plus 1000 minus 1020. How much? 100. For Y 160. 160. For Z 56. 56. All these are in. I hope you have done till this. Huh? Now, now working note number what? Working note number next. Working note number next is what we have to find out the GP rate. Anna, so computation of what? Computation of Gross profit rate. gross profit rate. It is given in your question as ratio. कुछ भी चलेगा. दोनों right है. Both are correct. In the same process. है कि नहीं? The same process how to find out. अभी तो करके दिया आपने. The question also. ये देखो. ये वाला. ठीक है? X, Y and Z. So here it will be what? Selling price. Total selling. Just a second. 6. GP का रेट डायरेक्टली करें. Just find the GP rate. X department, Y department, Z. Okay.
ये कितना, how much, how many units are given? 1000, 1000 units. 1000, 2000, एक सब करते हैं. 1000, 2000 and then 2400. 2400 to 400 into how much? 20 rupees. Into rupees 20. So what is this 1000 units? Units. 20 rupees. Here it will be 22. I go. 22.50. huh? This one will be 25. 25. Tell me the answers. 20,000. 0 ये सब rupees में चल रहा है ना. This one. 45,000. Is 45,000. This one 60,000. 60,000. What you will get from your total sale? Ah, total sale. The answer. Make it total. 125,000. 125,000. It's in rupees. Total purchase is also given. Use that. 1,00,000 रुपया था ना? मेरा क्वेश्चन. हाँ. Less total purchase. Total purchase is 1 lakh. Then whatever you will get is your profit. Gross profit. Is 5,000. यही आपका ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट. The next thing what we have to do, Ratio. gross profit in percentage. Okay. How to find out gross profit by sales? Which one? Total sales. Into 100. T sale में total sale into 100. GP is how much? Rupees 25,000. कहाँ से मिला सर? We find it out just now. Total sale कितना? 125,000. 125,000 है ना? Into 100. 100. It gives us how much? 20%. 20%. 20% of what? On sale. Sale price. हुआ सेल प्राइस है. चलो ठीक है. Next. Now what to do, what not to do. बोलो. See, the sum का जो वॉल्यूम में इतनी सुन, but for completing that sum you need to do working note of 1.5 or 2 pages. ये दिक्कत है. दिक्कत ये इसी तो है. ऐसा कुछ में तो कुछ हाथी हो रहा है नहीं कि हम गलत बोल दिए. Now find out the cost price. Working note number 3.
working worksheet. Computation of what? Profit and cost for each item. Of cost and profit ऐसे लिखो of cost and profit. भाई जो सिस्टम सिखाए थे ये वाला follow this format. ये वाला. If we is given profit you have to find it out and then calculate the cost. ठीक है. Same thing whatever you see over here same you have to do. सेल प्राइस सब रुपीज में. अच्छा प्रॉफिट सेल माइनस प्रॉफिट इज कॉस्ट. Cost. बोलो बंधु x y and z what was the sale price फास्ट का स्पीड बोलो. 20 हाँ rupees 20, 20 22.5 2.5 and 25. सब प्रॉफिट में कितना परसेंट 20% ऑन सेल यहाँ पे दिया मैंने ऑन सेल 20.50 से इस्तेमाल करने का रुपीज वॉट 20 into बोलो 20%. 20% comes to how much कितना 4 रुपए ना 22 गलत बोले क्या. No. कितना आ रहा है 4.5 है. 4.5. This rupees 25 into 20% comes to how much 5. 5. Now what to do sir, sale price minus profit is your cost, that means what 20 minus 4 जो भी निकला यहाँ से ये वाला 20 और ये वाला 4 समझा equals to rupees 16. सर यहाँ पे rupees if you don't want to write don't write पर already दिया here what we have to do 22.5 minus how much 4.5 8 ये वाला 4.5. comes to rupees 18 here 25 rupees given it to 25 or 5 minus 5 is rupees 20. 20 costing निकल आया. ठीक है नाउ सर करना क्या है opening stock should be made in cost isn't it. Purchase will be on cost. Sale price is given. Sale units are also given. Multiply करो put करो ठीक है. This way you have to find it out. कर ले क्या कि हो गया कौन सा हम करके दे कि जो हो गया तुमने कर लिया है कौन सा होएगा क्या? ठीक है फिर भी format क्या करते हैं opening stock purchase और
for your opening stock, this for purchase, and this for your closing stock. सेल का भी सेल का दिया हुआ था तो तुम्हारे ठीक है. X Y Z or now go to the question and say how much is the opening stock. Speed में बराबर 1920 1920 X Y का 1440 ये but say the units first. How much is the unit? Opening stock का unit कितना? 120 into करके ये सब कुछ करना पड़ेगा 120 और उसके बाद क्या है? Go to the question and see 80 यूनिट. हाँ कि ना गलत बोल रहे हैं हम? 152 into से how much was the cost? Cost कितना? 16, 18, 20. चलो rupees 16, rupees 18 and rupees what? 20 था. 20. Now say the answer. Multiply करें बता कितना आ रहा? 1920 1920. Yeah, it is 18 into 18 1440. यहाँ पे कितना? 3040 3040. Sir, in units or in rupee? Rupee में होगा. Rupee में. उसका तो multiply करें. ठीक है ना? In the same way, we have to do purchase also in this. बताओ कितना है? Now I'm not multiplying this one. Take the units from where? From your question. समझा? And put the cost price. टू करो आंसर निकालो. I'm going to the answer directly. बोलो कितना आ रहा है? 1000 into 160 16 अच्छा ये लिख देते एक सेकंड. 1000 into what? 16. तो same दिया. It comes to 16,000. एक आपके लिए करके दिया, बाकी का खाली आंसर बोलना. इसका आंसर कितना होगा भाई का? 36,000 36,000 here will be how much? 48,000 48,000. This one say क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक एक में बोल के बोल दूंगा, खाली एक में बोलूंगा. We have find out the closing stock. कितना का closing stock था? ये वाला 100, 160 and 56. 100, 160, 56. Here it will be 100 units. 100, 160, into 16 160, 56. लोग कर दे रहे हैं. 160 and 56 units. कितना? 16 रुपए जो निकला था. Cost 16 rupees, अपना 18 rupees, फिर अपना 20 rupees. Say the answer. 1600 rupees. इसका कितना? 2880 28 2880 2880. ये कितना? 1120 1120. ठीक है. ये भी कितना बोलते हैं?
working. So what will be the topics? ऐसे लिखते हैं ना, कंप्यूटेशन ऑफ मिसिंग फिगर्स, ये भी हो सकता है, ठीक है, कंप्यूटेशन मिसिंग फिगर्स। यहाँ पे सब वही पर्टिकुलर्स, डिपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, वो भी वर्किंग करते हैं, ये नहीं होता। इसमें डिपार्टमेंट एक्स इस तरीके से, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड, समझा? जितना आप सजाओ, जैसे लिख दे रहे इन whatever you have got from this one, बस जाकर पुट कर दो ऊपर में जो निकला हुआ है, ठीक है ना? ये स्टॉक कितना वैल्यू निकला, ये वाला 1920 1440 3040, बराबर बोलो। 1920 1920 1440 1440 3040 3040, परचेस का मतलब 16,000 16 16 1600 36,000 3600 48,000 48300, ठीक है। सेल पे अब क्लोजिंग स्टॉक पहले है, निकाले कितना होता स्टॉक कितना, closing stock 1600 1600। सर फ्रॉम वैल्यू यू आर गेटिंग दिस, अरे वर्किंग कैपिटल बनाया था 1600 300 कितना, 00 about 2880 भाई तो 1600 2880 1120, 1600 क्या था फटाफट 2880 880 1120 1120। सर सेल प्राइस क्या इंटू कर देखो क्वेश्चन कितना कितना दिया हुआ। ये हो गया टेक व्हाट सेल प्राइस, लिख दूं क्या? हाँ हो तो 1020 into 20 rupees 1020 इंटू व्हाट, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस तो सेल प्राइस लेना है, गड़बड़ मत कर देना। 20 इज गिवन इन योर क्वेश्चन 20 22.5 और कितना 25 12 लिख लेते हैं। 25 अच्छा कितना कितना सही 1920 है तो 1920 देख लेना कितना यहाँ पे 2496 इंटू बताओ कितना कितना 22.5 0.50 यहाँ पे कितना 25 25 कम टू द आंसर से कितना कितना है स्पीड तो अब 20400 0400 नेक्स्ट और अब 43200 43200 62400 62 400 62400। अब क्या करना है सीपी और क्या खत्म तो हो ही गया,
the addition, put the total amount over here minus this and this, which भी आया, क्या हुआ है? 22,000. पहला 22,000, 22,000 सब ये रिलेटिवली व्हाट 22,000 ये एडिशन करके ये दोनों माइनस दिस एंड दिस कितना है? 4080. 4080 है ना? हम्म. जस्ट वेट फॉर कितना बोला? 4080 है ना? 4080 हाँ. नेक्स्ट कितना? और और 46080. 46080 46080 आंसर कितना आएगा? 8640. 8640 ठीक है. नेक्स्ट लास्ट में बताओ कितना? 63520. 63 63520 20. तो 63520 एक मिनट रुक जाओ. 63320 अच्छा सीधा आंसर कितना आएगा? हाँ. 12480. 12480 खत्म. हर सम करके नहीं देंगे, सब आगे देंगे. आप लोग करना है. मेरा देखा देखी करने से फायदा नहीं है. आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम, यू हैव टू क्लियर योर एग्जाम. समझे? खुद से करोगे तो ग्रिप बनेगा. सर का देखा देखा टेस्टिंग करे तो कुछ नहीं होगा. फालतू का तब क्लास वेस्ट हो जाएगा यार. चेक इट आउट. चेक इट आउट. मैं कुछ दिक्कत नहीं करता. इस बार मैं लास्ट समय करवाऊंगा तो चक्कर खत्म. If you want to take a break, then take a break of 30 seconds या फिर 1 मिनट का. ठीक है ना? 1 मिनट पानी वानी पीने लगती है, उसके बाद फिर चालू करते हैं. So which one will be important for our exam? एक चीज बता देते. This sum can come in exam with a pencil. Write in this part must revise before exam. Question number 19 आ सकता है. Must revise before exam. 20 नंबर अब जो करेंगे that is also what must revise before exam वाला एग्जाम. वैसे ही जाना एग्जाम. More thing, इंटर ब्रांच ट्रांसफर होगा ना. ब्रांच बोल रहे हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर. वो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का जो क्वेश्चन होगा वो इम्पोर्टेंट. ठीक है. ये 3 चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है. फोकस ऑन दिस 3 फिर एग्जाम करेंगे. ठीक है. डन. ब्रेक ओवर. तो क्वेश्चन 20.
before doing this sum, I want to make this thing clear. क्या क्या चीज होगा देख लो पहले. Sir, is this complicated? एकदम ही complicated. इस तरह से इसका तो हिसाब जानना चाहिए कैसे क्या कर सकते हैं, ठीक है ना. How to approach जानना चाहिए. Question, read the question. एक चीज इसमें लिखा हुआ है. Follow this, huh? Concentrate करो उसमें. Mrs. Auto Garage consists of 3 departments: spare, service and repair. Each department being managed by a departmental manager. Important है इसमें है. By a departmental manager whose commission was what? 5%, 10% and 10% respectively. Means what? For department spare, for department spare, service and repair. 3 departments है. There are 3 departments. Now, what is the commission for this manager? For spare department it is 5%, for service department is 10%, and for repair department it is 10%. ठीक है. कहाँ पे यही वाला है. ठीक है. In absence of or inadequacy of profit, a minimum commission of 3,000 is to be paid to the manager. अपने मैनेजर को minimum to minimum 3,000 चाहिए. हम एक्सप्लेन कर देंगे. सूत्र क्या है. जब inter department transfer of goods and service are made on what? Loaded price. What is the meaning of this loaded price? What is the meaning of this loaded price? Loaded price means what? Invoice price or sale price जो भी आपको, ठीक है ना. Means in this loaded price it is what your sale price or invoice price. Short हम लोग क्या बोलते हैं? IP, invoice price को. So what is the meaning of this invoice price? Cost plus profit equals to selling price. वही वाला invoice price बोलते हैं. क्या बोले? Cost plus profit equals to loaded price बोलो, invoice price बोलो, sale price बोलो, all are same. Equals to IP, invoice price. That is what your loaded price. ठीक है. Read this question properly. कोई आपको ना ब्रेन में घुसेगी सर वो क्या है. 5% above cost. क्या बोले? 5% above cost बोला हुआ. 10% above cost and here also 10% above cost. सर किसका बात है? कमीशन सॉरी डिपार्टमेंट ट्रांसफर का बात है. ठीक है. मार्किंग करते हैं. इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर वो लोग करता कैसे है? नॉट इन कॉस्ट प्राइस. They do in this way. Cost plus profit equals to invoice price or loaded price, whatever you say. Load means profit. ठीक है. अच्छा. In respect of the year end 31st March 2023, the books has already been closed. बंद हो चुका है and positions drawn. Subsequently, it was discovered. क्या discover किया? It was discovered that closing stock of department had included in departmental transfer goods at what? At loaded price. यही गड़बड़ कर दिया. ठीक है. At loaded price instead of what? Current cost price. Instead of what? Current cost price. अब cost price में करना चाहिए था. What you have done? You have done it invoice price and loaded price. यही गड़बड़ हुआ. So what they are asking from you, from the following information, prepare revised statement recomputing the departmental profit or loss. आपको दोबारा इसको बनाना. Revise it once more. I mean revise करके आप जो सोचो वो नहीं.
Revise means what? Whatever you have done, you have to review once. Okay? And you have to find out what is the original profit or loss. Clear? Question clear हुआ ना? Come to this. अब ये कॉपी है. मैं कॉपी में इसमें कर रहा हूँ. इसके बाद पास कर. Sir, what we all are doing? Now we are doing this data analysis. Working note number 1. The way I'll do, you will also do in the same way. समझा? Data analysis. What's the name? Messrs. Auto Garage. Auto Garage. अच्छा, whatever I am doing right now, you will also copy with me. टाइम वेस्ट मत करना, ठीक ना? मेरे साथ से लिख के रहो. Messrs. Auto Garages departments. Namely क्या? These three. One is what your spares, isn't it? Spare नाम. Question deep में दिया. Spares. The next one is what? Service, and third one is repair. Yes. One, two. Wow. Done. Next one is manager's commission. Percent, isn't it? 5%, 10%, and 10%. 5%, 10%, and 10%. On what? On department's profit, isn't it? On department's profit. But one thing you have to add over here. But question has stated us that what minimum commission should be 3,000. Okay? But minimum commission is 3,000. But
minimum commission is rupees 3,000 for each department. Total में नहीं, for each department. For each department. Done. Hmm. IP. IP means what? Invoice price, right? Or loaded price, both the same. IP is cost plus 5%. है ना? First let me write. इसको लिखना. Cost plus 5%, cost plus 10% is cost plus 10%, cost plus 10%. So it is for what? It is for inter-department. What is it? Inter-departmental transfer. Short में लिखा department. ठीक है? Transfer. Cost plus 5% is for what? Spare. है ना? For spares. 10% for what? Service, and again 10% for repair. Spare department, service department, जो दिया हुआ कुछ. The last one is what? ना, repair. चलो फास्ट स्पीड करो. स्टार्ट कर. फास्ट 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 फास्ट. हो गया कि लिख रहा आंसर? Okay. Yes. Department. Right with me. Inter-departmental transfer.
Your department has received nothing. ठीक ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो, received nothing. यहाँ पे लिखो received rupees 10,500. Received rupees 10,500 किससे? From spare department. And next, the next one is कितना? Rupees 22,000 from किससे? From repair. So from where you are getting this information? From the question. And here write received rupees 2,100 from spares. ठीक है, done. This is all about your data. क्या है? एक लाइन और लिख मेरे पास. Right. Problem कहाँ? Problem is in closing stock. Yeah, problem is in closing stock. What problem, sir? It is recorded. Is recorded at invoice price मतलब load price instead of cost price. That is the problem. Done. Now you have to solve this problem. क्या problem में लिखा हूँ? The last one what we have done ना, किससे कितना मिला, where it is given in the question. So where is this one? ये one, this one, inter-departmental transparent load price. कैसे यहाँ पे what we have written over there, received nothing, तो यहाँ पे zero है तभी तो है ना. 10,000 spare से and 22,000 from repair is given in the question. 21,000 from where? From spares. ये मैंने इजीली मैंने वहाँ पर जाके लिख दिया. ठीक है.
नाउ सर हाउ टू डू दिस, सिंपल सा एक कंसेप्ट के ऊपर पूरा निर्भर है, ठीक है ना। Question states that how much is the loss and how much is the profit. 19,000 loss was paid. सर्विस डिपार्टमेंट के लिए 25,200 प्रॉफिट है और यहाँ पे 36,000 प्रॉफिट है। मैंने टू डिपार्टमेंट्स आर इन प्रॉफिट एंड वन डिपार्टमेंट इज इन लॉस, ये वाला देखो लिखा हुआ है 19,000, ठीक है। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन आई एम ट्राइंग टू से? हेलो, गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? কি বলছেন? समझ में आ रही है? হ্যাঁ বুঝতে পারছি। See, from where we will start, we have to rectify the profit. समझा नहीं? तो अगर प्रॉफिट ठीक ठाक नहीं करे तो नहीं, मैंने आप लोग ख्याल नहीं सकते। So start from this one profit वाला, नेट प्रॉफिट और लॉस में दोनों है ना उसमें। 19,000 was loss, माइनस ब्रैकेट में करेंगे। 25,236 was given in the question, हमने पुट किया, ठीक है ना। Now see what we have to do. Managers remuneration. Managers what? Managers remuneration. Just question is stating us that what is the how much is the commission of this manager, ठीक। जब 5%, 10% and 10%, these three things will be on what? On profit. The profit is inflated over, समझा? प्रॉफिट जो है ना उसमें गड़बड़ी है। वाई सर गड़बड़ी है? डिपार्टमेंटल ट्रांसफर इज डायरेक्ट द आईपी नॉट एट कॉस्ट, वही तो बोलना प्रॉब्लम यहाँ पे। जो भी अच्छा, इफ अ डिपार्टमेंट सेंस things to other department, if department sends things to other department माने goods transfer के जो, if they are adding the profit, if they are what adding the profit and then transferring, वो क्या बनता है? डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बनता है। व्हाट इज इट? वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट बनता है। बट in this question that is given that three departments are there, so three departments is there, single business बन गया ना। At the end of the transaction or the end of the year, at the end of the 6 month whatever, जैसे भी वो लोग चाहिए यहाँ पे the end at 31st March बोल ही दिया, 31st March 2023। तो whatever inter transfer profit is there, that is not the actual profit। सच में profit थोड़ी है। माने in my business, if one department is transferred to other department, will they earn any extra profit? No, never। वो तो इसलिए करते ताकि उन लोगों को समझ में ना कि कॉस्टिंग कितना है। कॉस्टिंग सीख गया तो बहुत दिक्कत खड़ा करेगा, समझा ना? तो दैट इज द रीजन वी हैव टू एलिमिनेट इट। नाउ दिस डिपार्टमेंटल मैनेजर जो है इसको मिला 5%, 10%, 10% का जो कमीशन उसका है, जो कमीशन उसका है वो कहाँ पे पुट किया होगा? वॉलेट। Let's think that this is what your profit and loss account. For example, debit, credit. For example, बोल रहे ऐसे कुछ है नहीं क्वेश्चन। I'm putting this two commission. अच्छा से ध्यान से समझना। I'm putting this two commission, and then I'm getting my नेट प्रॉफिट। इसका मतलब क्या हो गया? इस नेट प्रॉफिट में ये कमीशन का इफेक्ट है, आया ना? जो भी नेट प्रॉफिट हमारा निकलेगा इस नेट प्रॉफिट में ये कमीशन का इफेक्ट है कि नहीं है? हाँ। उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, समझा कि नहीं यार?
एलिमिनेट करना पड़ेगा। नाउ थिंक, ये जो कमीशन जो है, दिस इज व्हाट योर 5%, एंड वॉट एवर इज कमिंग यहाँ पे, वॉट एवर इज कमिंग यहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट किसके ऊपर आ, आई मीन क्रेडिट में जितना भी होगा माइनस डेबिट करके जितना भी आया, हाँ यार, इतना भी लोग बोल नहीं पाए, हाँ यार टाइप शुड यूनिटरी मेथड किया, यूनिटरी मेथड, अरे सेम चीज है भाई, अलग सेम चीज। ध्यान से सुनना, दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से कंसंट्रेशन लगाओ इस पे, आएगा ही सा फंसेगा। दूसरा तरीका समझा है और भी सीखना। Plus profit is what your sale price. ऑन कॉस्ट अगर बोल दिया गया, ऑन कॉस्ट अगर क्या, इतना टेलिंग ऑन कॉस्ट क्या दिया हुआ ना, ये वाला 5% above cost, that means what, cost is 100, आया ना, cost is 100, प्रॉफिट इज हाउ मच, 5, आईपी कितना बन गया 105, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कॉस्ट इज 100, प्रॉफिट इज 5, पहले सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105, क्लियर हो रहा ना, 105। और अगर ऐसा हम बोले कॉस्ट, ध्यान देना, कॉस्ट प्लस व्हाट दिस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल प्राइस, इफ सेल प्राइस इज 100, मान लो प्रॉफिट अगर 5 है तो कॉस्ट कितना बन जाएगा, यहां तक क्लियर हो जो बोल, इफ cost is 95, profit is 5, then sale price will be 100। ये तो डेटा लगेगा सॉल्व करने में, इसलिए समझाया, ठीक है। तो गड़बड़ी कहाँ पे था देखते हैं, अब इसी है जो करना था कर लो, यही वाला ही सीखना था, ये वाला और ये वाला, these two things have to learn, नया चाहिए। Write these two things in your copy, समझ नहीं कहाँ से, coming to this point, how much loss was given sir, 19,000 loss was given, हाँ किया ना, हाँ, बट दिस वाज क्या, रॉन्ग वाला है ना, ये जो कमीशन का जो हिसाब गणित है ये तो रॉन्ग वाला है भाई, क्योंकि आपने इंटर ब्रांच ट्रांसफर इसमें किया था, इनवर्स प्राइस में, अनलोडेड प्राइस में किया था, जबकि आपको कॉस्ट में करना चाहिए था, ठीक है ना, तभी तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट वहां से माइनस होगा ना, ठीक है। चलो तो 19,000 इनटू व्हाट वी रिक्वायर कमीशन, और कमीशन कितना दिया हुआ है, द क्वेश्चन, कमीशन कितना दिया हुआ है 5%, 10%, है तो, एंड 10%, तो पहला वाला 5%, दूसरा वाला 10%, तीसरा वाला 20%, ऑन व्हाट, 95, 90 एंड 100, सर कहाँ से कंसेप्ट आया, ये वाला से, ये वाला से, ठीक है। व्हाट वी वांट वो ऊपर होना चाहिए, और जहां से जा रहे वो नीचे होना चाहिए, ये रट लो, ये एक बोल रखी यूनिटरी मेथड ना, उतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, एक लाइन खाली याद रखना मेरा, जहां पे जा रहे वो ऊपर, जहां से जा रहे वो नीचे, व्हाट इज इट, जहां पे जा रहे वो, व्हाट वेयर यू वांट टू गो शुड बी अप, फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग शुड बी डाउन, समझा, जहां पे जा रहे वो ऊपर, जहां से जा रहे वो नीचे। ये 19,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 95% को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, तो डिवाइड बाय 95 into 5, मतलब जहां से जा रहे हो ऊपर 5, जहां से जा रहे
नीचे में 95, ठीक, ये वाला किए। एंड 3000 विच एवर इज व्हाट हायर, अगर तुम अगर कमीशन अगर लेगा तो कौन सा लेगा, वहाँ बोला हुआ था ना कि मिनिमम 3,000 रुपये का कमीशन होना चाहिए। मैंने मान लो या तो जो पैसा उसके पास जो आ रहा है वो 3,000 की, मान लो फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपये आ रहा है, तो कौन सा आप लोगे, 3,000 लोगे कि 4,000? आपको कमीशन मिल रहा है, आप कौन सा लोगे, 3,000 की 4,000? ऐसे मैनेजर 4,000 ऑब्वियसली हायर वाला लेंगे भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, हायर वाला लेंगे। तो 19,000 इंटू 5/90 करके जो भी फिगर आ रहा होगा, देख लेते कितना, 19,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 95 कितना आता है 1,000, ये करके कितना आएगा, ये वाला फिगर कितना आएगा, ₹1,000। और कितना बोला गया था मिनिमम 3,000, तो विच वन यू विल टेक, 3,000 ही लेगा और क्या लेगा, फर्स्ट में आ गया अपना 3,000। अब सेकंड में भी वैसे 10/90 कैसे आया, 10/90 यहाँ पे कैसे आया 10/90, ऊपर ही में हम खोल के रखे थे, जैसे यहाँ पे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 100 हो गया, यहाँ पे अगर मान लो कि प्रॉफिट 10 है, यहाँ भी अगला वाले में प्रॉफिट 10 है, तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि सेल प्राइस कितना 100 बराबर, यहाँ भी 100 बराबर, तो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, यार कैसे आएगा 100, यहाँ से माइनस करेंगे और क्या करेंगे, 100 minus 10 is what, 90, यहाँ भी 100 minus 10 is 90, समझ में आया क्या बोले हम? हाँ। ये फॉलो करो और उसका आंसर बताओ। 10/90 और 10/90 करके देखना कितना आ रहा है, और 3,000 से कंपेयर करना, पीछे वन इज हायर उसको मिलेगा, यहाँ पे हायर कितना 3,000 आ रहा है, कैलकुलेट करके देख लेना कितना आ रहा है, और इसे कंपेयर करना, जो हायर होगा वही मेरे को लेना। जैसे कि यहाँ पे 36,000 इंटू 10/90 करके तो कितना आएगा, 4,000 रुपीज आएगा, यहाँ पे इसका आंसर 4,000 रुपीज आएगा, और यहाँ 3,000 का मिनिमम है, तो आप कौन सा लगेगा, 3 की 4, उस तरह से मैं 4,000 में लेता हूँ। अंडरस्टूड, ये सब कर पूरा के इसको एड बैक करो। सर एड बैक व्हाई वी आर डूइंग एड बैक, ये गलत है इस कारण से, जो गलत है उसको एड बैक करो, जो होना चाहिए उसको माइनस करो। ऑब्वियस सा बात है कि इफ यू आर गिविंग रेपुटेशन टू मैनेजर तो आपको प्रॉफिट मार्जिन को कम कर देता है, लेकिन गलत अमाउंट्स का कम किया हुआ था, इसीलिए व्हाट वी हैव डन एड बैक करके जो होना चाहिए उसको माइनस करें, तो करेक्ट वन शुड बी 0, तो करेक्ट वन नीचे, ठीक है। अच्छा सर ये सॉल्व करें कितना आएगा, 16,000 कहाँ से आ रहा है, यहाँ भी माइनस कितना है, -19,000 प्लस 3,000 करने से -16,000 ही आएगा। यहाँ पे 23,200 एंड हियर इट इज 3,000 प्लस कर देखो 28,200 ही आएगा, 36,000 प्लस 4,000 कितना आएगा, 40,000। Now what we have to do, we have to minus, कौन सी चीज माइनस करना पड़ेगा, जो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में जो प्रॉफिट माने लोड का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट का जितना भी मार्जिन है उसको माइनस करना पड़ेगा भाई। वी वांट एक्चुअल वाला ना, एक्चुअल वाला प्रॉफिट, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट से मतलब नहीं है। तब सर व्हाई वी आर डूइंग दिस वन, व्हाई वी आर डूइंग दिस वन कर रहे हैं, बोल पाएगा क्या, only to calculate managerial remuneration, ठीक है, only to calculate managerial remuneration कितने एक्चुअली भाई मैनेजर को किस में मिलता है कमीशन, डिपार्टमेंट का प्रॉफिट क्वेश्चन इज स्टेटिंग नॉट, देखो अब सर ये 5/105 कहाँ से आया, ऊपर ही में समझा देता हूँ, ठीक है। Okay. Once come to our self note, बेहतरीन और ये वाला। Now what we are using only this data, inter department transfer वाला data, 10,500 from spare, 22,000 from repair। कौन लिया था सर्विस, स्पेयर में कुछ लिया नहीं है, सिर्फ दिया ही है,
रिसीव्ड नथिंग बट गिवन टू होम, गिवन टू दिस सर्विस डिपार्टमेंट, कितने का, क्या 10,500 का, एंड इन रिपेयर ऑल्सो 2100, इतना का स्पेयर से मिला, तो आपको याद रखना पड़ेगा। अब दिस वन इन दिस कैलकुलेशन 10,500 का ट्रांसफर था सर्विस को, आया ना, अभी तो लिख के तब नहीं था। सर्विस को 10,000 कितना 500 का ट्रांसफर हुआ था ना, हाउ मच वी वांट, हाउ मच वी वांट, अरे बोलो यार, हाउ मच वी वांट, दिक्कत हो रहा है। ना ना सर 5/105 सर कहाँ से आई, 5% इज व्हाट, 5% क्या है, सोचना पड़ेगा। अरे यही तो लिखे थे, यही वाला इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर में कितना कितना करके काम किया हुआ देख लो। आईपी प्राइस कितना 5 10 10, वही तो यहाँ पे अप्लाई करना है, 5 10 10, 5% डिवाइड बाई वॉट 105 बाई 10,500 इज इन विच वैल्यू, लोडेड प्राइस माने आईपी, आईपी में है ना, डिपार्टमेंट इज ट्रांसफरिंग टू अदर डिपार्टमेंट किस पे, आईपी है तो आईपी, और आईपी में क्या अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, तो 5% था अमाउंट, इफ प्रॉफिट इज व्हाट 5, योर कॉस्टिंग इज 100, सेल प्राइस कितना बनता है 105 पर मैं बताए थे, एंड व्हाट वी वांट ओनली द प्रॉफिट वाला, ओनली द प्रॉफिट मार्जिन, ये जो 10,500 है, दिस 10,500 इज ट्रांसफर्ड इन द आईपी प्राइस, दिस 10,500 इस पे है आईपी प्राइस, तो फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग, फ्रॉम आईपी, व्हाट वी वांट ओनली द इंटर प्रॉफिट का परसेंट, कितना उसका प्रॉफिट उसमें घुसा कर, ठीक है ना, तो वी आर गोइंग फ्रॉम आईपी, तो जहां से जा रहे वो नीचे इस व्हाट योर 105, और जहां पे जा रहे वो ऊपर इस 5, 5 अपने को इंटर डिपार्टमेंट के ट्रांसफर का प्रॉफिट चाहिए था, 5% वॉज द प्रॉफिट, जहाँ पे जा रहे हैं वो 5 ऊपर, ठीक, जहां से जा रहे हैं आईपी वाला, आईपी इज इक्वल टू 105, 5/105, ठीक है, तो हाउ मच यू विल गेट 500, नेक्स्ट इज 22,000, देखो सब लिखा हुआ वर्किंग नोट 22,000, एंड यहाँ भी वही हिसाब है कि 10% वाला हिसाब 10/110, कैसे सर, इन द सेम वे वी हैव लर्नड इन दिस पार्ट, ठीक है। रिपेयर में जाके देख लो, रिपेयर में 2100 रुपये ट्रांसफर था ना फ्रॉम स्पेयर, 2100 फ्रॉम क्या, 2100 फ्रॉम स्पेयर से था, आईपी हाँ, तो 2100 इंटू वॉट 10/110, वही वाला हिसाब है, क्यों सर 10/110 बिकॉज ऑफ द आईपी माने लोड प्राइस, ठीक है। हाउ मच वी आर गेटिंग, कैलकुलेट करके देख लेना, 191, और यहाँ पे कितना 500, यहाँ पे कितना 2,000, मेरे को यही सब चाहिए, 500 2000 191 यही, ठीक, ये जो लिख रहे थे स्पेयर से गया अपने ट्रांसफर, रिपेयर से गया अपने ट्रांसफर, जिसको मिलता है, जो डिपार्टमेंट को मिलता है, तो डिपार्टमेंट विच इज रिसीविंग इज व्हाट ट्रांसफरी, जो दे रहा है वो ट्रांसफरर, जो ले रहा है वो ट्रांसफरी के अंदर कितना कितना आपका डिपार्टमेंटल इंटर प्रॉफिट छुपा हुआ अनरियलाइज्ड, इन टोटल 500 प्लस 191 इज 691, ठीक है, और यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, तो 2000 से 2000 ही रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं रिसीव, ठीक है, दिस टू थिंग्स वी हैव टू पुट अप, यहाँ पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को माइनस करो 691, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे 2000 करके दो, कितना है सर -16,000 -691 दोनों मिलाया कितना बन गया, पंच हो जाएगा,
अगर नहीं समझ में आता देख लो। 1669 minus 16,000 minus what 691 comes to what minus 16,691 समझा। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जो ऊपर तक वही नीचे, ठीक है। जब 40,000 minus 2,000 is how much 38,000 क्लियर हुआ। हाँ दिस शुड बी द करेक्ट प्रॉफिट जो दिख रहा है, ये वाला, ये वाला और ये वाला। हालांकि ये लॉस है, 16,691 इज योर लॉस अमाउंट, लेकिन होना ये चाहिए, समझा ना। नाउ आफ्टर गेटिंग द करेक्ट वाला डेटा व्हाट वी विल डू, जो भी कमीशन है इसके ऊपर अप्लाई, क्या समझे, जो भी कमीशन आपका है अब क्या होगा, इसके ऊपर अप्लाई होगा। बस आ गया क्वेश्चन पर, खुद से ही करना पड़ेगा हाथ से। तो थिंकिंग सर कर देगा ना, कॉपी करने बैठते तब तो हो गया। देख लो 16,691 पुट किए इंटू 5% करके देखो, 28,200 आया था ना, यहाँ पे 28,200 इंटू 10% करके देखो और 3,000 से कंपेयर कितना है, तो हायर को भेजना पड़ेगा। सेम थिंग 38,000 यहाँ से आया, इंटू 10% करके देखो और 3,000 से कंपेयर करो, जो हायर होगा आपको वही पुट करना है, समझे। एक में बोल दो 38,000 इंटू 10% इज हाउ मच 3,800 होगा, ये वाला इंटू करके। तो यहाँ पे 38,000 है, पीछे पर इज हायर, तो हायर कौन सा होगा 3800 3800, तो 3800 इस तरह से। यहाँ पे देखना ये कम हुआ तो 3 ऊपर हो गया, यहाँ पे कम हुआ 3 ये आंसर। लेस है ना, तो 16,691 ए माइनस में 3,000 माइनस में कितना आ जाएगा 19,691, ये तो नॉर्मल ऊपर वाला। 28,200 माइनस 3,000 इज 2,500, 38,000 माइनस 3,800 comes to how much 34, बस खत्म। समझ में आ गया नहीं आया, कुछ था नहीं इसमें, हाथी घोड़ा कुछ नहीं था दिमाग में, ठीक है। सर डिपार्टमेंटल ये सब बनाना पड़ेगा क्या, क्वेश्चन खुद क्या बोला, व्हाट टू फाइंड, क्वेश्चन पर दो क्वेश्चन क्या बोला, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ रिवाइज स्टेटमेंट रिकम्प्यूटिंग डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट या फिर लॉस, समझे। क्वेश्चन खुद बोल दिया क्या निकालना है, ट्रेडिंग नहीं करना, सो प्रॉफिट बोल, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। हो गया कि वो आज सकते हो गया, हाँ हो रहा ठीक है। Now do this in your home, 20 क्वेश्चन नंबर 20 will be your homework, जितना भी किया होगा ऑलमोस्ट हम करके दिए, बस अब पुट करना है, निकालना, ठीक है। दिस द लास्ट क्लास ऑफ डिपार्टमेंटल, ठीक है। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल डू एनी नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। टिल देन डू योर सम्स, डू, अच्छा कोई एक सम में सर मेरे को बहुत दिक्कत होता है, तो व्हाट टू डू, do that sum at least 3 to 4 times, same sum। आपको समझ में आएगी कहां से क्या कैलकुलेट करना, फटाफट फटाफट, ठीक है। चल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास में।